बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नैयर इकबाल। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैलकुलेट किए। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम उसी मेथड को उसी तरीके से बिल्कुल ऑन द सेम पैटर्न वी शैल फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1। स्टूडेंट्स, you can guess what will be the cube roots of -1. दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 27। ये क्वेश्चन 5 है आपकी एक्सरसाइज का। प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 ये होते हैं, यानी 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड विद माई नेगेटिव साइन। दीज टू आर कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 एंड हेंस प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू -2। You can say 3 cube roots of -1 we want to calculate. So, suppose x is the cube root of -1, that is x is equal to -1, this is. So, x is equal to -1 raised to power 1 by 3. Therefore, taking cube, we can write here this is equal to -1 and x cube, this -1 when comes to left hand side it becomes positive and we can write here this one. Now students, you know a cube plus b cube, it is a plus b a square minus ab plus b square. This is the formula. So we have, on factorization, we have x plus 1 x square minus x plus 1, this is equal to 0. So keeping each factor equal to 0, x plus 1 equal to 0, this gives x is equal to -1. And now x square minus x plus 1, this is equal to 0. Here a is 1, b is -1 and c is 1. So in quadratic formula we have 1 minus 4 divided by 2, which on simplification gives us -3 divided by 2. और अगर आप ये नेगेटिव साइन यहाँ से ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2. सो यही आपने दो रूट्स मालूम करने थे. सो इट इज़ प्रूव्ड that complex cube roots of -1 are 1 plus square root 3 iota divided by 2 and 1 minus square root 3 iota divided by 2. So ये तो प्रूव हो गया. नेक्स्ट we have to prove this one, that is 1 plus -3 square root divided by 2, it's 9 plus 1 minus and divided by 2 raised to power 9. हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. So students, first of all, what is this? Its value in terms of omega. What will be its value in terms of omega? So consider, I tell you, consider ओमेगा. हम जानते हैं कि -1 प्लस -3 its square root divided by 2. This is the value of omega. We know. If we multiply this by minus, we have 1 minus -3 square root divided by 2.
which shows that this term is equal, yani this term is equal to minus omega, and omega square we know minus 1 minus 3 square root divided by 2. इसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वी हैव 1 प्लस minus 3 square root by 2. So we can say that cube roots of minus 1 are minus 1 minus omega and minus omega square. नो हम लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यूज़ लगा देते हैं. ओके, दैट इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 9 प्लस ओमेगा माइनस रेज टू पावर 9. Here you see that will be minus omega 18 प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ ना ओमेगा 9. You know omega cube is always 1, so omega 9 again 1 and omega 18 again 1. All powers of omega which are multiples of 3 is equal to 1. Once again note it please. All powers of omega which are multiples of 3, this is equal to 1. So minus 1 that is equal to minus 2, this is equal to right hand side. Now why omega cube is equal to 1? Students, inshallah we shall prove this result when we study properties of cube roots of unity. So here please remember that omega cube is always 1. Therefore omega 9, omega 18, omega 27, all powers exponents of omega which are divisible by 3 are equal to 1. So students, inshallah next lecture में हम 3 cube roots of 8 कैलकुलेट करेंगे. So meet you in next lecture.